ऑफ अगर हम देखें तो मीडिया एक फंक्शंस एज अ ब्रिज बिटवीन कल्चर एंड सोसाइटी, जो कि कंटिन्यूअसली शेप और रीशेप करता है कल्चरल पैटर्न्स को। अगर हम मीनिंग देखें, मीडिया का मीनिंग क्या है, तो मीडिया रेफर्स टू वेरियस चैनल्स थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज डेसिफर्ड. The information does not only include knowledge but also includes ideas and messages that are communicated to larger audience. It acts as a medium connecting individual with wider social realities. Traditionally जो मीडिया है वो बहुत प्रिंटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, जैसे न्यूज़पेपर, बुक्स, बट अभी के समय ये एक्सपैंड कर चुका है, ब्रॉडकास्ट, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये सबको भी इंक्लूड करता है। आज के समय में ग्लोबल स्केल में मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन को फास्ट बनाने में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करने में। इसका स्कोप जो है बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, जैसे कम्युनिकेशन के बियॉन्ड भी इसका स्कोप है। फॉर एग्जांपल ये पब्लिक ओपिनियन अपना शेयर करता है मीडिया के थ्रू, लोगों के बिहेवियर को मैनेज करता है मीडिया, इन्फ्लुएंस करता है, ट्रांसमिट जो कल्चरल वैल्यूज होते हैं एक कल्चर से दूसरे कल्चर प्लस जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, उनमें कल्चरल वैल्यूज को ट्रांसमिट करने में मीडिया हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ मीडिया का अगर हम बात करें तो मीडिया के बहुत ही मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्टेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्रिंट मीडिया देखें तो उसमें आता है न्यूज़पेपर, मैगजीन, जो कि हम लोग को इन डेप्थ एनालिसिस साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है कल्चरल प्रैक्टिसेस का। ब्रॉडकास्ट मीडिया देखें तो ये टेलीविजन और रेडियो को इंक्लूड करता है, जिससे हम मास पॉपुलेशन तक हम रीच कर सके, मास ऑडियंस तक रीच कर सके, और बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन शेपिंग पॉपुलर कल्चर। डिजिटल मीडिया एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ मीडिया है, बहुत ही इवोल्यूशनरी फॉर्म है, जो अभी प्रेजेंट में रूल कर रहा है मीडिया के स्फेयर को, और पर्टिकुलरली इसमें सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल है, क्योंकि लोगों के पास बहुत कॉमनली फ़ोन अवेलेबल है और इंटरनेट अवेलेबल है, जिसके थ्रू वो डिजिटल मीडिया को आसानी से एक्सेस कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ इसका नेचर बहुत ही इंटरैक्टिव है, जिसके कारण लोग इसको एक्सेस इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। अब कल्चर समझते हैं। अगर कल्चर मीडिया को समझने के बाद कल्चर समझना बहुत ज़रूरी है। कल्चर बेसिकली रेफर करता है शेयर्ड वैल्यू, बिलीफ, ट्रेडिशन, कस्टम, या फिर वे कैसे सोसाइटी सोचता है, क्या काम करता है, उनका कस्टम, रिचुअल्स क्या है, इसका मतलब होता है कल्चर। ये दोनों टेंजिबल एलिमेंट्स सच एज फूड, क्लोथिंग, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, आर्ट इन सारे एलिमेंट्स को भी इंक्लूड करता है, प्लस साथ ही साथ इनटेंजिबल एस्पेक्ट जैसे लैंग्वेज हो गया, नॉर्म्स हो गया, जो आइडियोलॉजी विच वी कांट इवन टच एंड फील, वो हम भी इंक्लूड करता है। कल्चर स्टैटिक नहीं है, ये बहुत ही इवोल्यूशनरी है, ये इवॉल्व कर रहा है थ्रू टाइम विद सोशल इंटरेक्शन एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। वन ऑफ द मेजर जो लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं, अपनी बातों को कम्युनिकेट करते हैं अपने ये, और मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस होते हैं, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कल्चर जो है इवॉल्व हो रहा है। मीडिया को हम कल्चरल इंस्टीट्यूशन के तरह समझते हैं। पहले मीडिया जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कल्चरल इंस्टीट्यूशन के रूप में एक्ट करता है। ये जो है केवल सोसाइटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, पर सोसाइटी को शेप करता है। It selects and presents certain aspects of reality while ignoring others, thereby influencing how people interpret the world around them. कैसे लोग आसपास अपने वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं, उसको डिस्क्राइब करता है, प्लस उसको उस इन्फ्लुएंस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, अगर जैसे थ्रू रिपीट किसी भी चीज़ का एक्सपोजर अगर हमें रिपीटेड हो, तो वो बहुत main purpose is to provide political information to the public. However, it does more than just inform. It also shapes how people interpret government policies and political events. In simple terms, media act as a bridge between government and the people. Functions of media. Media plays several important roles in politics, like first, spread information and keep citizens updated. Second is it's setting the agenda, declining which issues are important. Third is it shapes public opinion by influencing how people think. Fourth is it acts as a watchdog by monitoring government actions.
And finally, it contributes to the political socialization by educating citizens about political values and responsibilities. Uh, Agenda setting role. One of the most important role of media is agenda setting. This means the media decides which topics people should think about. For example, if news channels repeatedly focus on unemployment, people start seeing it as a major national issue. So media may not tell us what to think, but it definitely tells us what to think about. Now, media and public opinion. Media also plays a huge role in forming public opinions. When people are repeatedly exposed to certain ideas or viewpoints, they start believing them. The way news is presented, whether emotional or factual, can influence people's thought and decisions. This is especially important during elections, where media coverage can important voting behavior. Social media and politics. Platforms like Facebook, Instagram, and Twitter, like X, have completely transformed politics. They allow direct communications between political leaders and citizens without any middlemen. Also, information spreads very quickly, making digital campaign highly effective. Today, social media is one of the most powerful political tools. A case study है. Now let's took a case study. During the 2014 and 2019 general elections, political campaigning in India changed significantly due to digital media. Firstly, political parties began using platforms like Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter for campaigning. Unlike traditional media, these platforms allowed direct communication between leaders and voters without any filters. For example, leaders could post speeches, message, campaign updates instantly, and millions of people could see within minutes. Second, WhatsApp play a major role. Political parties created thousands of WhatsApp groups to share messages, videos, and slogans, etc. Third is targeted advertising become very important parties using data to send customized message to specific groups like youths, farmers, or first-time voters. Another key factor was digital campaigning. Strategies such as hashtags, viral videos, memes, and online rallies. These methods help parties engage especially with younger voters. Now, challenges of media. However, media is not always positive. It also has several challenges. This includes fake news, misinformation, and media bias. Sometimes media is controlled by political or corporate interests, which can mislead the public. This media is not always neutral. It can both support democracy and manipulate it. Therefore, it is very important for citizens to think critically and not blindly trust. Conclusion. To conclude, media plays a decisive role in shaping politics. It informs people, influences opinions, and strengthens democracy. But at the same time, it also brings challenges like misinformation and biasness. So we need responsible media and aware citizens. Way forward may for the future we should promote media literacy, control fake news, support independent journalism, and transparency in media ownership is also essential. Thank you. ठीक है, अब सिलेबस में क्या है थोड़ा बता दो, यूनिट 1 to 5।